So those on YouTube, just check the audio on the screen whether it is visible or not. Okay, within a 2 minutes we'll start the lecture. Okay, just check the audio on screen is visible or not, that the power factor section is visible or not, and then we'll start the lecture within 2 minutes. Okay. So tomorrow we'll complete with this model. Okay? Tomorrow we'll complete this model. And tomorrow we'll discuss about the exam also. Okay? So what is the pattern of question paper? What will be the type of the questions? The marks go over and all the things. Okay. So those who join, you can write your name and just check the audio and video that is working properly. Start the lecture with an okay. Sure. So, उनको present भी हम मुकुंद, अमोल, आयुष, उनका रवाड़, अमय, मंदार, आयुष, गच्छित, सारा, वैशाली, मेहर, कृष्णा, विद्या, गौरव, साइश, नंदिनी, परमकोली, गुरु. Sure. So today we'll discuss about the power factor. In the last lecture में देखा था कि what is a power? What are the different types of power? So let's start with the power factor. Simple concept. Before starting the power factor, you should know what is a power. The last lecture में देखा था what is a power? There are different types of the power. That is active power, reactive power, and apparent power. ऐसे different types of power देखे थे. उसका formula देखा. So once again we'll go through that slides and then we'll start with the power factor. Power factor is one of the easiest concept, but अगर logic उसका जो concept clear नहीं हुआ, then it may create too much problem for everyone. But the concept is very simple. So first of all, देख लेते कि what is the active power, reactive power, and other things. We saw in the last lecture what is a power, that is active power, and active power is a VI cos. It is the RMS value of voltage, and this RMS value of current, and this is the active component of the current. Cos. कैसे count करते हैं? In the watt. If the value is too large, then we use a kilowatt. So active power, consumed power, true power, real power. Watt is a unit, and P is equal to VI cos. These are the formula. Then for the reactive power, capital Q, it's a VI sine part. Okay, and what is the unit? VAR, that is volt ampere and reactive. This one is unit. Then the next one, last one, that is the apparent power. That is S is equal to VI. Both are RMS only, and unit is a VA. Notation is a capital S. And by using all three P, Q, and S, we design the one triangle. That is a right angle triangle. So the hypotenuse is S, this opposite is Q, and adjacent P. So what we say? We can say S square is equal to square root S square is equal to P square plus Q square. Only sin pi, cos pi, and tan pi. Then we design here. So let's take one more. What is a cos pi here? मुझे cos निकालना तो क्या होगा? Adjacent upon
hypotenuse. So what is the cos pi? Adjacent upon hypotenuse. That is P by S. Okay. Now let's start with the concept of power factor. So what is a power factor? Let's start. See, power factor, that means it's a ratio of power. So whenever you see a factor concept, factor matlab it's a ratio. Always read. Whenever kaha pe dekha what is a factor? The factor matlab it's a ratio. Kiska factor hoga? It's a factor of power. That means a ratio of power. So there are two powers here. It's a ratio of power. So first one is the active power and the apparent power. So what is a power factor? It's a ratio of active power and apparent power. So what is active power? It's a capital P. What is the apparent power? It's a capital S. What are the formulas? VI cos pi. And what is the formula? VI only. So kya cancel over? VI and VI get cancelled. So what is a power factor? It's a cos pi. What is a power factor? It is noted by PF. Small p and small f. Okay. So what is a PF? It's a power factor. It's a ratio of active power by apparent power. Active power is a P, apparent power is S. It's a VI cos pi divided by VI. VI and VI get cancelled. What is the remaining? Cos pi. So what is a power factor? Power factor is a cos pi. लेकिन सबसे पहले किसी ने पूछा what is the power factor? Before cos pi क्या बोलना है? It's a ratio of active power by apparent power. तो they will understand हाँ cos pi तो कोई भी बताएगा ना. जैसे किसी ने पूछा Ohm's law, everyone tell you V is equal to IR. लेकिन ये सबसे लास्ट में है ना. What is the initial term? That is I is proportional to V. That is the first thing. Same. किसी ने पूछा power factor क्या है? तो सबसे पहले ये बताना है. This one is the last concept. That your power factor is cos pi. Okay. So let's see the slide for the power factor. See this one. So it is a ratio of true power by the apparent power. So true power is also known as active power, real power, consumed power. There are different names. We can use any power. True power is the same as capital P only. So we can use true power, active, consumed, real, anything. By the apparent power, that is a capital X. So VI cos pi divided by VI, V and VI get cancelled. The answer is a cos pi. So what is the power factor? It's a PF is equal to cos pi. PF is equal to cos pi. उसका सी केस ऑफ टेबल कैसे ड्रॉ किया, टेबल कैसे बनाया, ठीक है. So any doubt in the concept of power factor? Anyone? Just go through the concept. उसका टेबल देखिए, टेबल कैसे है, ठीक है. So any doubt in the power factor? Check करो. Else in the chat box you can write concept of power factor is clear. Just go to the table, this one. Then we will see what is a table. ये टेबल कैसे ड्रॉ किया मैंने वो देखिए. Just go to the concept of power factor is clear. Yes, check. So till tomorrow जो भी मैं teach करूँगा that will be part of syllabus. Okay. Just check करो that is a power factor is clear. चलो बराबर. How it says power factor is clear. Others. So the concept of power factor is clear. Everyone. Umkar also says, Mirja also says yes. Simple concept. Okay. It's a ratio of P and S. तो काफी factor का नाम सुना. Factor मतलब ratio. किसका ratio है? Power. कौन से दो power? P and S. Okay. गलती से Q मत लिखो. यहाँ पे Q का presence नहीं है. So any doubt? Anyone? Sure. Okay. Power factor is clear. No doubt in the power factor. Sure. Let's go for the next one. कि टेबल मैंने जो बनाया यहाँ पे टेबल कैसे आया? Let's see. हमने देखा what is a pure L, what is pure R, what is a pure C, that is a pure resistive inductive capacity. Okay. So let's go for this one. So I'll make it one table. First one is a pure R, second is a pure L, and third is a pure C. Okay. Now I require some parameters. Just tell me what is the relation between V and I. यहाँ in the pure L. Both are in phase. Both are in phase. Okay. 0 से start होगा and voltage and current दोनों 0 पे start होगा. Both are maximum at the same point. Again 0 at the same point. Again negative maximum same point. Both are in phase. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे current is a lag voltage. यहाँ पे current is a lead voltage. Okay, by 90 degree.
by 90 degree. Then the next concept is what is a phase difference. यहाँ पे phase difference कितने का था? That is a phi. हमने देखा था phase difference क्या होता है? It is a phase of voltage minus phase of current. दोनों का difference. तो जब in phase होता है, तो what is the phase difference? 0 degree. In the pure L, what is the phase difference? 90 degree. But positive या negative? बोलो, it's a positive or negative in the pure L. यहाँ पे it's a 90 degree. So what is the phase difference between this two? It's a positive 90. तो यहाँ पे क्या होगा? This is negative 90. ठीक है? So what is the phase difference? 0 degree plus 90 degree minus 90 degree. ये हमने देखा है. तीनों का separately हमने study किया था. What is pure R, pure L, pure C? So the pure R in phase, pure L, I lag V by 90 degree and C, I lead V by 90 degree. What is the phase difference? पूरे circuit का what is the angle? पूरे circuit का what is the angle? That is 0 degree plus 90 degree minus 90 degree. And then मुझे find out करना है what is the power factor. That is what is the power factor? It's a cos pi at the end. Now this is phi. Just put cos 0. Cos 0 is how much? 1. याद रखना है. ठीक है? 9th में देखा था 10th में trigonometric table. So cos 0 is 1. Then cos plus 90 is how much? Cos plus 90 is 0. And cos minus 90, how much? Answer is also 0. See, cos does not have any effect of a negative. Even the answer is minus theta. Answer is same. And even the answer is positive theta. Answer is same. So cos plus 90 minus 90 both are same. Cos plus 30, cos minus 30 both are same. तो negative sign का कुछ भी effect नहीं होता है cos पे. Okay? Which is याद. So cos 0 is 1, cos 90 is 0, and cos minus 90 is also 0. So exam में किसी ने पूछा, वाइवा में किसी ने पूछा कि what is the power factor for the resistor circuit? Answer is 1. What is the power factor for the capacitive circuit? Answer is 0. And what is the power factor for the inductive circuit? Answer is 0. ठीक है? ये concept याद रखना. Power factor is maximum 1 and minimum 0. Power factor maximum value कितना आएगा? 1. And power factor minimum value 0. So it's a 1 and 0. इसके बीच में आएगा. 1 आया मतलब it's a resistor circuit purely. 0 आया मतलब it's a either inductive or capacitive circuit purely. इन दोनों के बीच में आया 0 to 1 के बीच में, that means it's a mix of pure L, R and C. इसका combination. So whenever you have combination of all things, that time it is between the 1 and 0. नहीं तो 1 and 0. So this is maximum and this is minimum. Okay? Let's go through the table. So this is a table जो हमने देखा था अभी. So it is a pure R, pure L, pure C. The first one is in phase. I lag V, I lead V. Phase difference क्या है? What is phi? 0 degree plus 90 degree minus 90 degree. And what is power factor? It's a cos phi ना. The cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos minus 90 is 3. So what is the maximum value of power factor? Answer is 1. What is the minimum value? It's 0. So this one is a maximum and this one is a minimum. Okay? Now just go to the table. Just go to the table. Which would out in the table or any concept, then ask. Else in the chat box you can write table is clear. So the chat box you can write table is clear. चलो. Any doubt anyone? Just check the table. कुछ भी doubt होगा तो पूछो. So till tomorrow, जो कुछ भी होने वाला lecture में, everything will be part of the exam. Okay? तो जितने मैंने अब तक YouTube पे lecture लिए, and 2-3 मैंने extra lecture लिए थे on the Meet, Google Meet पे लिए थे. Okay? Sure. And tomorrow itself we'll discuss about the paper. Sure. Anyone, any doubt in the table? No one? Sure. So Mandar, Param, Aish, Gaurav, Disha, Amir, Vedant, Vaishali, Nandini, Rachit, Sarah, Munkar, Umar, Rahul. सबने किया. Very good. Those who are present only they will get the attendance. Okay. Tanishk,
फिनिश कब आ गया अभी? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. So ये concept सबका clear हुआ? Anyone? So let's take one sum. Just tell me what is the plot. Let's take one sum. I'll do the question. मुझे answer चाहिए. Question one is, if active power of a circuit is 20 watt and apparent power is 60 VA, because apparent power का unit क्या है? V है ना, 60 V. Then find power factor. ठीक है, this one is a question. So यहाँ पे given क्या है? So what is the given? That is the active power. Capital P कितना दिया? 20 watt. And the apparent power कितना दिया? 60 VA. And what we need to find? We need to find the power factor. Sure. Use your logic, use a calci, and just tell me what is the power factor. So power factor is equal to cos pi, which is equal to P by S. यहाँ पे cos pi नहीं लिखा तो भी चलेगा. You can directly write power factor is equal to P by S, because cos pi का use नहीं. There are two formulas, P by S and cos pi. We can use anyone depending upon the given. जैसे given दिया उसके ऊपर. So P is how much? 20, and S is 60. Just tell me what is the answer. The chat box and give the answer. And always remember, for the power factor there is no unit. Okay, power factor does not have any unit because it's a factor na dono power. Both are different types of power, both are power, so that's why there is a no unit. Okay, they don't have any unit. Power factor does not have any unit. Yeah. So whenever there is a factor like form factor, peak factor, उसमें कुछ unit नहीं है ना. So like that, power factor कुछ भी unit नहीं है. Okay. But form factor and peak factor values constant 1.11, 1.414. यहाँ पे value is not a constant. It is between 0 to 1 or sometimes 0. So I said 0.3. Exact 0.3 है, check करो. और 0.333 ऐसे. Is it exact 0.3 or 0.333 ऐसे बढ़ती जाता? One by 3 नहीं लिखना है, it's 0.33. Okay, at least write 2 digits. चलेगा. For your point of view, at least write 2 digits. 0.33. It's a continuous, but at least write 2 digits. 0.33. This one is a power factor. Is it between 0 to 1? Answer is yes. 0 to 1 के बीच में है, तो it's a perfect. तो 0 से नीचे नहीं चाहिए and 1 से ऊपर नहीं चाहिए. That means your answer is correct. Otherwise 60 by 20 क्या होता तो answer 3 आता. That is wrong ना. 3 तो नहीं आना चाहिए because power factor is 0 to 1. इनके बीच में आना चाहिए. ठीक है? Any doubt in this sum? Sum में कुछ भी doubt है? Yeah, it's very correct. तो 0.33 लिखा तो भी चलेगा. 0.333 लिखा तो भी चलेगा. It's okay. आयुष मुझे बता, it's very correct. Yeah. So any doubt in this sum? So in the chat box you can write sum is clear. Okay. And then start the new concept, second last concept of this topic, that is a series RL circuit. एक ही सर्किट में हम लोग रेजिस्टर एंड इंडक्टर दोनों कंबाइन करते हैं. Yeah, so in the chat box you can write sum is clear. Good. So there are 49 students, still there are only 20. Max to max count 20 है बस. Let's see exam में क्या करते हैं.
So no doubt, anyone? Sum is clear. So let's start with the next concept. It is a series RL circuit. ठीक है, अच्छे से देखो. It's a very important concept. It's a lifetime concept. It's a series RL circuit. मतलब एक ही सर्किट में we have a resistor and inductor. इससे पहले क्या था? We have a resistor separate, we have a inductor separate. ऐसा था ना? Now join both the one. We'll join both the things. Resistor and inductor, both the components with the same diagram. So we have a resistor, we have an inductor, both are connected in series. So resistor, inductor, and series. Okay, ये तीनों है. And then we have AC supply. So this one is a V, this one is a current I, this one is the R, and this one is the inductor. Okay. Now just tell me, this one is a series network. दो component connected है ना? So which quantity is the same? Voltage or current? Which quantity is different? Voltage or current? You just tell me voltage and current. Which quantity is the same and which one is different? दो component है ना? Like we have resistor 1, resistor 2. दोनों series में connected है. तो उनमें क्या same होता है? Voltage same होता है कि current same होता है? Like that we have two separate components ना? Resistor and inductor. Just tell me for the resistor and inductor, which quantity is the same, which electrical quantity is the same, and which electrical quantities are different. Voltage same होगा, current same होगा. Just tell me the logic and just tell me the answer. Which one is the same and which one is different? Series network. Okay. Just tell me which one is the same and which one is different. देखते हैं किसको आंसर आता है. So which one is the same? Series network. Okay. Series network is there. तो voltage same होता है series में कि current same? उन तो same असता. Rahul says current is same. Amol says current is same and voltage is different. Yes. दोनों का current same. The current is same and voltage is different. ये हमने देखा था. When we see the series network, कि whenever we are in a series, जितने component series में connected हैं, उनका current same होता है, but voltage is different. So what I can write? Now we have two components. Na? First one is resistor. So VR and VL both are different. Both are different. But IR and IL is equal to I. This is same. Yes sir. अब यहाँ पे कैसे? V is equal to VR. लेकिन ये AC circuit है, इसलिए directly लिख नहीं सकते. But we can write this one. कि here the current is same for all the one. Total circuit का current flowing through the resistor and the current flowing through the inductor, all three are same. So but the voltage are different. So what I'll do, these are same. तो इसका voltage कितना है? That is VR. And इसका voltage कितना होगा? That is V. Okay. Now we need to design a formula for the VR, VL and other things. So what is the, by using Ohm's law, VR is equal to क्या है? See what is Ohm's law? V is equal to IR ना? तो अगर मुझे VR find out करना है, VR. So I'll write IR. Why IR? Because voltage across the resistor. कैसे find out करना है? It is the current flowing through the resistor and the value of resistor's resistance. That is IR. Okay? Because we are finding VR. अगर मुझे VL find out करना तो क्या होगा? I into XL. Because R के जगह पे which component is there? That is XL, not L. L is used to induce EMF. मुझे R की जगह पे component लिखना है. What is the job of R? To oppose the current. Inductor में which component oppose the current? Not L, it's XL. तो R की जगह पे कौन आएगा? That is XL. Okay? These are the two formula. VR is equal to IR and VL is equal to IXL. उसके बाद मुझे अगर V लिखना है, capital V, that is a total voltage is equal to total current. यहाँ पे क्या आएगा? What is the total resistance here? We have two components, resistor and inductor. The total component क्या आएगा यहाँ पे? Just tell me which parameters act as a total resistance यहाँ पे? ये मुझे find out करना है. Okay? Sure. In the meantime, just go through this one. यहाँ तक देख लो. कुछ भी doubt है? This diagram and these two formulas. उसके बाद we'll find what is the total voltage.
Okay, so just go to PPT. एक बार PPT go through करते हैं. Slide देख लो. See this one. Resistor, inductor, VR, VL, V. It's a AC circuit, no? So V is equal to V of sin omega t. This one is correct. So voltage drop across R, मतलब VR, it's IR. Ohm's law is simple. Voltage drop across L is VL is equal to IXL. R के जगह पे कौन आएगा? XL, because R and XL both are same. In terms of job, both are same. So any doubt in the given slide? Just go through this one. And then मुझे फाइंड करना है V is equal to I क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे कैपिटल R लिखना है कि कैपिटल XL लिखना है कि दोनों को ऐड करना है. When we write down the whole पूरे सर्किट का, okay, वो देखो. यहाँ तो कुछ भी डाउट है देख लो. Else in the chat box you can write concept of series RL is clear. ठीक है, just go through the given slide. कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. And then let's see the next one. How to find capital V? Then उसका waveform, उसका phasor diagram, then impedance triangle, power triangle, voltage triangle, सब देख. Okay, and tomorrow we'll see the sums based on this one. Sure. So concept of series RL circuit is clear, everyone. उसके बाद सोचो मुझे total voltage find out करना है. V is equal to I into क्या लिखना है? ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखना है. So no doubt, anyone? Sure? मुझे क्या लिखना है? V is equal to I. यहाँ पे क्या लिखूं? अगर मुझे टोटल वोल्टेज, सी ये वोल्टेज किसका है? रेजिस्टर का, तो दैट्स यहाँ पे रेजिस्टर. ये वोल्टेज किसका है? इंडक्टर का, दैट्स यहाँ पे एक्सएल है. लेकिन अगर मुझे टोटल सर्किट का वोल्टेज फाइंड आउट करना है एज ओम्स लॉ, तो टोटल सर्किट का वोल्टेज, टोटल सर्किट का करंट, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? आर एक्सएल, ये दोनों का एडिशन. जस्ट टेल मी क्या है यहाँ पे एट द क्वेश्चन मार्क, व्हिच टर्म विल बी देयर? जस्ट टेल मी कि वहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है? जस्ट टेल मी, सिंपल है. टोटल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल एक्सएल, कैपिटल एल की दोनों का एडिशन. ठीक, कुछ डिफरेंट ही है. लेट्स सी इसको आता है. सो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? है ना, टोटल रेजिस्टेंस. Sure. So let's see at question mark what will be there. The new concept is known as impedance. See, तुमने देखा VR is equal to IR, VL is equal to IXC. अगर यहाँ पे VC होता तो I can get VXC. लेकिन अगर मुझे V is equal to I ऐसे लिखना है तो यहाँ पे आएगा Z. And what is Z? It is known as a total resistance. And how to find total resistance? That is Z. Z is equal to square root of R square plus XL square. This is known as impedance. What is impedance? It's a capital Z. ये क्या represent करता है? It's a total resistance. We have two component ना. ये तो छोड़ दीजिए next इसमें. Resistor and inductor दो component है. दोनों को मिला के कितने resistance होने वाला है वो count करना. So how to find this impedance? By using square root of R square plus XL square. मतलब ये सेम एज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो अगर मैंने इसका ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से सेम. Z यहाँ पे R और यहाँ पे XL. तो यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे R एंड XL कैसे है. ठीक, ये देखेंगे हम. तो पता चला कि कैसे फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज impedance. Its work as a total resistance. And how to find? Z is equal to square root of R square plus XL square. And what is the unit? Unit is ohm itself. So Z, R, XL तीनों का यूनिट क्या है? That is ohm.
because job is same ना, resistance it also resistance, जैसे total resistance काम तो same ही, इसका नाम क्या है, that is the inductive reactance, resistance, but the job is same, to oppose the current. Okay, so let's see the slide. What is it? So impedance, the new concept is known as impedance. So what is impedance? It is defined as the opposition of the circuit to the flow of alternating current. तो सर्किट में अपोज करना है किसको, फॉर द फ्लो ऑफ करंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ टू फाइंड z is equal to square root of r square plus xl square. Okay, and what is the unit? Unit is ohm. So any doubt in the impedance? Any doubt? Anyone? Check करो. So impedance क्या आता है? That is a total circuit में कितना resistance है to find out. So you can call it as a total resistance of circuit. Amor says I r plus xl. ठीक है, लॉजिक इज क्लियर, मतलब जो लॉजिक आपने यूज किया r plus xl, ठीक है, चलेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट हाउ टू फाइंड एक्चुअली r square plus xl square and square, ऐसे है. एडिशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, वी नीड टू यूज दिस वन, बिकॉज़ इंपेडेंस ट्रायंगल जब ड्रॉ होगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला कहां से आया. इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम. सो एनी डाउट इन द इंपेडेंस? एनीवन? सो इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट इंपेडेंस इज क्लियर. तो क्या लिखना है चैट बॉक्स में? दैट इज इंपेडेंस इज क्लियर. And then go for the waveform. उसके तो waveform कि ऐसा waveform क्यों है. तो in the chat box you can go for impedance is clear. तो कुछ डाउट होगा स्पेसिफिक तो पूछो. Any doubt anyone? Impedance is clear. But total resistance, ये सिर्फ from our discussion ना, एग्जाम में लिखूंगा total resistance है. It's impedance. तो ऑन पेपर क्या लिखना है? impedance. तो याद रखते टाइम लिखना है कि impedance क्या होता है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, बिकॉज पूरे सर्किट में नॉट ओनली रेजिस्टर नॉट ओनली इंडक्टर, दोनों कॉम्बिनेशन. तो दैट टाइम यूज द impedance टर्म. तो पेपर पे क्या लिखना है? impedance. कंसेप्ट क्या उसका? दैट इज अ टोटल रेजिस्टेंस. ओके, देन वी गो फॉर द वेवफॉर्म. वेवफॉर्म कैसे आता है? चलो लेट्स गो फॉर द वेवफॉर्म. सी यहाँ पे दो कंपोनेंट कनेक्टेड है, दोनों का वेवफॉर्म ने देखा था. द प्योर आर क्या था? वोल्टेज एंड करंट इन फेज थे. सो इन फेज मतलब क्या था? बोथ विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. तो वोल्टेज भी यहां से स्टार्ट हुआ था एंड करंट भी वहां से स्टार्ट हुआ. ठीक है, ऐसे क्या था? दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट. दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस वन इज 2. ये हमने किया था. सेम इन द प्योर इंडक्टर में देखा था. आई लैक्स वी बाय पाई बाय 2, मतलब आई लेट स्टार्ट होगा एज कंपेयर टू द वोल्टेज. तो वोल्टेज अगर 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से 0 पाई बाय 2 और दिस वन इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस वन इज 2 पाई. तो करंट कहां से स्टार्ट होता? करंट पाई बाय 2 लेट स्टार्ट, लेट हुआ था, लैग मतलब लेट. तो पाई बाय 2 लेट स्टार्ट. दिस विल बिकम 5 पाई बाय 2. यहां पे दिस वन इज द वोल्टेज एंड दिस वन. अभी सर्किट में दोनों कंपोनेंट है, रेजिस्टर भी एंड इंडक्टर भी. तो इनमें से कौन सा फॉलो करना है? रेजिस्टर का ग्राफ फॉलो करना है वेवफॉर्म कि इंडक्टर का फॉलो करना है? दैट इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है. तो क्या लिखना है? अगर पूछा एग्जाम में इन द सीरीज आरएल सर्किट ड्रॉ द वेवफॉर्म, तो कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है? रेजिस्टर और इंडक्टर के दोनों का कॉम्बिनेशन. दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो प्रॉब्लम है. आंसर कैसे लिखेगा? सी दोनों में विच वन इज सेम? वोल्टेज दोनों इसमें वोल्टेज सेम ही, 0 से स्टार्ट हो रहा है. प्रॉब्लम सिर्फ करंट का, यहाँ पे करंट 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे करंट पाई बाय 2 से स्टार्ट. सो व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज आरएल कि सीरीज आरएल में कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, तो दो उसका कंसेप्ट, देयर आर टू कंसेप्ट.
दो पॉइंट वो याद रखो. द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड फॉलो द वेवफॉर्म ऑफ इंडक्टर. कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है? इंडक्टर का. कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है? इंडक्टर का. ठीक है, लेकिन 100% इंडक्टर को सपोर्ट मत करो, बिकॉज यहाँ पे रजिस्टर है ना, रजिस्टर नाराज हो जाए कि हाँ यू आर ड्रॉइंग द सेम वेवफॉर्म ऑफ इंडक्टर, तो मुझे क्या मिला? तो ठीक है, तो रजिस्टर को भी कुछ तो भी दे दो. इंडक्टर क्या बोलता है कि द करंट स्टार्ट लेट बाय पाई बाय टू. इंडक्टर ने क्या बोला कि करंट पाई बाय टू से लेट स्टार्ट. नाउ वी आर फॉलोइंग इंडक्टर, तो व्हेनेवर यू हैव अ सीरीज आरएल सर्किट, तो कौन सा वेवफॉर्म ड्रॉ करना है? इंडक्टर का. ये वाला. लेकिन इंडक्टर का वेवफॉर्म ड्रॉ किया, लेकिन रजिस्टर को भी सपोर्ट करना है ना. सो हाउ डू वी सपोर्ट द रजिस्टर? यहाँ पे पाई बाय टू है ना, करंट इज लेट बाय पाई बाय टू. ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा. व्हेनेवर यू हैव अ इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर होगा तो करंट कितने से लेट होता है? पाई बाय टू से. बट इफ यू हैव अ रजिस्टर एंड इंडक्टर, दोनों देन गारंटी नहीं है कि ये पाई बाय टू से लेट होगा. इट मे बी लेट बाय 30 डिग्री, it may be late by 60 degree, it may be late by 90 degree, it may be late by 80 degree, it may be late by 40 degree, कुछ भी हो सकता है. हाँ, करंट इज लेट, इतना तो फिक्स है, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग टू इंडक्टर ना, एंड इंडक्टर में करंट इज ऑलवेज लेट. बट वी हैव अ रजिस्टर आल्सो, सो इसका कुछ भी गारंटी नहीं है कि करंट इज लेट बाय 90, करंट इज लेट बाय 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी. हाँ, लेकिन वोल्टेज से लेट ही, इतना तो गारंटी है. ठीक है. सो व्हेनेवर यू हैव प्योर रजिस्टर, ये वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं. व्हेनेवर यू हैव प्योर इंडक्टर, ये वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं. बट व्हेनेवर यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट टाइम विल ड्रॉ दिस वन, इंडक्टर वाला. बट द सेकंड कांसेप्ट इज नॉट नेसेसरी ये पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा, इसका कुछ भी गारंटी नहीं. इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम 30, 40, 60, कुछ भी. राइट नाउ वी डोंट. तो दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस पहले कितना था? पाई बाय 2. अभी डिफरेंस कितनी है? 2. दैट इज अ 5. कंसेप्ट पता चला कि हाउ टू फाइंड द वेवफॉर्म फॉर द प्योर सीरीज आरएल. इट विल फॉलो द वेवफॉर्म ऑफ इंडक्टर, बट दिस पाई बाय 2 इज नॉट श्योर, ये कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पे पाई बाय 4 ये भी आ सकता है, चलेगा. राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट दिस वैल्यू, ये वैल्यू मुझे पता नहीं है. जब प्योर इंडक्टर था दैट टाइम आई नो कि ये पाई बाय 2, लेकिन राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट इज दिस वैल्यू. इट मे बी एनीथिंग, 30, 40, 60, 80, 90, कुछ भी. Any doubt? Anyone? Sure. Let's see the waveform and then कुछ भी doubt होगा तो पूछो. Let's see the waveform. See, 0 से start हुआ voltage. Yes, voltage 0 से start हुआ. And current देखो late start हुआ. 0 के बाद start हुआ. Current late start हुआ. Yes. लेकिन कितने से late start हुआ? मैंने यहाँ पे पाई लिखा है. कुछ वैल्यू लिखा है? pi by 2, 3 pi by 2, 20, 30, 40, 60. Nothing. Right now I don't know what is pi. ये pi बाद में find out करेंगे. कैसे? By using cos pi. Cos pi is equal to p by s. ऐसे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. But right now I don't know what is pi. तो कितने से लेट है ये मुझे पता है. So I starts late than v by pi. Right now I don't know what is pi. But what is pi? Pi is a phase difference. So the concept पता है ना, what is pi? It's a phase difference. So whenever you want to draw the waveform series RL, follow the inductor, but not blindly. Blindly मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट मत करो. Right now we don't know what is the late. कितने से लेट हो पता. ठीक है. सो ये याद रखो. सो हम लोग कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है, तो हम लोग इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा एवरी टाइम, इंडिया विल विन. लेकिन ये गारंटी देते क्या कि इंडिया कितने से जीतने वाला है? 1 रन से, 10 रन से, 100 रन से. सो हियर द करंट स्टार्ट्स लेट, ये तो फिक्स है, लेकिन कितने से लेट होने वाला है दैट वी डोंट. दिस वैल्यू मे बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, इंडक्टर का वैल्यू कितना है, वोल्टेज कितना है, इस सब के ऊपर डिपेंड. मोस्टली आर एंड एल इसके ऊपर डिपेंड. ठीक है. सो एनीवन, एनी डाउट इन द वेवफॉर्म? सो टू कांसेप्ट, फॉलो एल बट विथ 5. 5 मतलब वी डोंट नो व्हाट इज 5. pi by 2 नहीं. ओके, जस्ट गो थ्रू द वेवफॉर्म. एनी डाउट? कुछ डाउट होगा पूछो. एल्स इन द चैट बॉक्स. द वेवफॉर्म इज क्लियर. कैसे लिखना है? वेवफॉर्म इज क्लियर. कैसे? कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. गिव द रिप्लाई. So if there is a XC in the plane of XL, then we say, okay, जब XC होगा then I'll tell you. Okay, इसके बाद in tomorrow's lecture we'll see what is series RC circuit. Okay, that will see what is a RC. In your syllabus you don't have RLC. There is a one more concept, जब resistor, inductor, capacitor तीनों combine होंगे,
तो क्या ये आपको सेम 3 में same subject I will teach you because continuation उसका. Tomorrow we'll see what is RC. We'll see the same diagram in the RC, same waveform in the RC. Right now just focus कि जब RL होगा follow L but not blindly. Don't even कोई follow को ना. Right now we don't know what is angle. Some every sum में different होगा. Okay. So any doubt anyone? So doubt is clear. Someone? फर्क में लिखा है वेवफॉर्म इज क्लियर, तो अच्छे से समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो दोज आर मिसिंग दिस लेक्चर उनको प्रॉब्लम है. ओके, मतलब दे कैन वॉच द लेक्चर वंस अगेन, लेकिन लाइव कुछ पूछ नहीं सकते. ओके, दिखने में कितना सिंपल कंसेप्ट लगता है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, सिंपल. सो वेवफॉर्म इज क्लियर एवरीवन, कुछ भी डाउट नहीं है. जैसे अमोल ने पूछा कुछ डाउट है तो पूछो. शॉर्ट वेवफॉर्म में कुछ भी डाउट नहीं है पक्का. अभी वेवफॉर्म हो गया, विल फॉलो द वेव डायग्राम. ठीक है, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम ऐसे देखिए. So let's go for the vector diagram or phasor diagram. कैसे ड्रॉ करें? Let's see. Just go through the circuit. यहाँ सर्किट पे कौन-कौन से टर्म्स है? Other than this two, ये दोनों छोड़ के कौन-कौन से टर्म है? वोल्टेज एंड करंट के. देखो I, VR, VL and V. ये तीन कंसेप्ट है ना. Other than this resistor and inductor, कौन-कौन से कंपोनेंट है? I, VR, VL and V. While drawing the phasor diagram, ये चार ही ड्रॉ करना है. On the phasor diagram, on the vector diagram. कैसा था vector diagram? ऐसा ना, देखिए this one. ऐसा. This is the phasor diagram ना. So we need to draw the phasor diagram for the series R by using this four component. ठीक है? Let's draw it. अच्छे से देखो, कुछ डाउट होगा तो पूछो. We need to draw the vector diagram. And कौन-कौन से कंपोनेंट है? V, I, VL and VR. IR कहाँ पे? It's the same as I. These are the four different components. यहाँ पे there are too many voltage and current is only one. So vector diagram of series RL circuit कैसे draw करना है? Let's see. Which term is only alone? यहाँ पे current is अकेला. It's only one. We have three types of voltage: V, VL and VR. So what we'll do? We'll start with the zero. यहाँ पे एक point draw करता हूँ. इसको एक horizontal line extend करता हूँ, and this is your current. This is zero. इसे draw करना है. First step, just draw the horizontal line towards the right side. Mark it as I. इससे पहले हम लोग क्या करते थे? इसको mark करते थे V. क्या mark करते थे? V. But यहाँ पे V कितने हैं? 1, 2, 3. 3 different V है ना? So rather than V, we'll mark I. Zero horizontal line I. ठीक है? Then उसके बाद, what is a VR? It's a voltage of resistor. Now in the resistor circuit, current and voltage क्या होते हैं? In phase. In the resistor circuit, voltage and current, because यहाँ पे resistor लिखा है ना, so in the resistor circuit, voltage and current are in phase. So on the same line, I draw the VR. On the same line, I draw the VR. इसका मतलब क्या हुआ कि the voltage and current are in phase, but which voltage? Voltage of resistor. Okay, because voltage of resistor and the current are in phase ना, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, एंगल कुछ भी नहीं, जीरो. That's the same line पे ड्रॉ करो VR. ठीक है? उसके बाद we'll go for the VL. तो VL मतलब voltage across inductor. In the inductive circuit, I lags V by 90 degree ना. In inductor circuit, series RL नहीं बोल रहा हूँ. In inductor circuit, current lags V by pi by 2, which we VL. लेकिन यहाँ पे I तो मैंने ड्रॉ किया है, मुझे क्या ड्रॉ करना है? VL. I को चेंज नहीं कर सकते, so we'll change the sentence. I lags V. इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? V leads I by pi by 2. Same ना?
इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो पाकिस्तान इंडिया से हार गई, बोथ आर सेम। ये चेंज क्यों किया मैंने सेंटेंस, बिकॉज मैंने आई तो ड्रॉ किया है, अभी मुझे ड्रॉ का करना है वी ए, तो बोथ सेंटेंस आर सेम। आई लैक्स वी बाय पाई बाय 2 सेम एज वी लीड्स आई बाय पाई बाय 2, मतलब वी आई से पाई बाय 2 से आगे, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। सो आई से वीएल कहां पे जाएगा, 90 डिग्री अप, बिकॉज यहाँ पे लीड्स है ना, 90 डिग्री अप, सो यहाँ पे 90 डिग्री अप। सो दिस इज योर वीएल। once again कैसे किया बता दो। So let's see the first step once again. सबसे क्या करना है, just draw the zero, एक dot दो and just draw the zero. Just wait. First of all, just dot here, just draw the I. So when I draw here, then we need to draw the VL. VL and I both are in phase because by using resistive circuit. Resistive circuit में ये दोनों in phase है 0 degree, तो same line पे draw the VR. Then VL. VL मतलब inductive circuit. In the inductive circuit, करंट लैग होता है, करंट पहले से ड्रॉ किया है लेकिन करंट फिर से ड्रॉ नहीं कर सकते। सो अगर करंट लैग है मतलब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज लीड होगा बाय 90 डिग्री। सो 90 डिग्री वीएल ऊपर जाए, दिस इज 90 डिग्री। सो वीएल हुआ, वीआर हुआ, आई हुआ, व्हाट इज द रिमेनिंग वी। नाउ टू ड्रॉ वी, लेट मी ड्रॉ इट एंड देन पुश डाउन अगर पुश। हाउ टू ड्रॉ वी, ये लाइन को, वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करो एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकली एक्सटेंड करो। कहां पे मीट हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से, यहाँ इसको वर्टिकली एक्सटेंड करो डॉटेड लाइन से। कहां पे मीट हुआ, दिस वन, एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन, दिस इज योर कैपिटल। एंड ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस स्लैंटेड लाइन, डायगोनल लाइन, इस पे जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द फाई। ये फाई क्यों चाहिए, कि कितने से लेट हुआ है करंट वो फाइंड आउट के लिए ना। हमने देखा ना, आई लेट V by 5, ये 5 क्या है, this value will give the 5, ठीक है। यहां तक देख लो, कुछ भी डाउट है। so what is the vector diagram, this is your vector diagram, just go through, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, तो फिर से बताऊंगा, कुछ डाउट होगा तो just go through the vector diagram, this is also the phasor diagram, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, चलेगा, कुछ डाउट नहीं। So just go through the vector diagram. Once you're done, just write it's clear. The vector diagram is clear. Simply. Just go through it, and then we'll see the different triangle. Three triangle लिखेंगे, then खत्म. Okay. Then we'll take some and tomorrow's lecture. Just go through the vector diagram. This also known as a phasor diagram. कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. Okay. Just I will take 30 second का break and just drink the water. क्या होगा समझ पड़ रहा है. Just give me 30 seconds and just drink the water. In the meantime, just go through the diagram. कुछ भी डाउट होगा तो पूछो. Okay. Just type that doubt in the message box, okay, chat box, and back. So anyone in doubt in the vector diagram? Such it was simple one. Sure. So इतना अच्छे से study करो. That means in the next lecture, in the next year, you can teach this things to your juniors. तो आपका छोटा भाई होगा, you can teach the same thing to other sections. Okay. Same concept 12th standard में, 12th standard
लेकिन उनको इतना समझेगा बिकॉज उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है. सो देखो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लर्न दिस टॉपिक आफ्टर 1 year. राइट नाउ यू आर जस्ट इन फर्स्ट ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड, सेम एज 11th स्टैंडर्ड. वी आर दैट मच नॉलेज. उनको तो 1 साल के बाद पता चलेगा, वो भी नहीं समझेगा ये कैसे ड्रॉ किया. So they have one chapter in the 12th, that is the AC circuit. So in that AC circuit, they are this series iron. Sure. No doubt anyone. So let's see the PPT and let's see the vector diagram. So this is a vector diagram. मैंने जो ड्रॉ किया, मैंने सेम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किया. देखो, this one is a VR, this one is a I, this one is a V, and this one is a V. मैंने सेम ड्रॉ किया, and this one is an angle phi. This one is angle phi. Now I want to draw different types of triangle by using vector diagram, phasor diagram. कैसे ड्रॉ करना है? Let's see. This part is known as the base. तो ये base as it is copy करो नीचे. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ. This part is the base, तो मैंने as it is copy किया base. ये हो गया BR. Okay. Then this part is known as the diagonal ना, or we can say hypotenuse. मैंने as it is copy किया V. अभी मुझे यहाँ पे चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, dotted line है. So what will do? Let's shift this line on the right side. Not here. ये यहाँ पे शिफ्ट करते, so we can draw here. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, this will become here. खत्म. So how to draw the voltage triangle by using phasor diagram? ये same as it is copy करो, ये same as it is copy करो. यहाँ पे dotted line है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट करो. अलीगढ़ के ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल. देखो मुझे मिले यहाँ पे. This is your VR, this is V, this is VL, and this is angle phi. खत्म. This is मतलब voltage triangle. देखो मैंने नीचे ड्रॉ किया V, VL, VR, and this is angle phi. Now by using voltage triangle, I want to derive some points. So by using Pythagoras theorem, what I write? V square is equal to VL square plus VR square. लिख सकता हूँ. Yes. If I write sin pi, तो क्या आएगा sin pi? It's opposite upon hypotenuse. Opposite क्या है? VL. Hypotenuse is V. So VL upon V. मुझे अगर cos pi लिखना है तो cos pi क्या आएगा? Adjacent upon hypotenuse. So VR upon V, VR upon V. मुझे लिखना है tan pi. So क्या आएगा? That is the opposite upon adjacent. So opposite क्या है? VL and adjacent VR. So VL upon VR. These are the 4 formulas from the Pythagoras theorem. This voltage triangle. The voltage triangle से मुझे 4 फॉर्मूले मिले. Now just tell me, मुझे अगर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर, इन 4 में से which formula is important, which formula is useful? मुझे अगर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो which formula is useful? Just go through all the 4 formulas and which formula is useful to find the power factor. ये कौन आ गया बीच में? इसको निकाल दो, मेरा ध्यान नहीं था. चलो इसको निकाल दिया. कुछ आ जाते बीच में. So if I want to find power factor, मुझे power factor find out करना है. ठीक है? So which formula is useful? Sin pi, cos pi, tan pi के V square. Just give the answer in the chat box. Let's see. कौन देता है? कौन देता है वो? Simple actually. मुझे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है. कौन सा यूज होगा इसमें से? What is power factor? No one? Sure? किसी को आंसर नहीं आ रहा है? सिंपल तो है. मुझे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है by using this 4. Which one is useful? कहाँ से मिल सकता है पावर फैक्टर डायरेक्टली? What is power factor? P by S. लेकिन P by S कुछ काम का है क्या? नहीं. What is power factor? Cos pi. तो यहाँ पे cos pi कौन सा टर्म है? This one. तो cos pi is the same as power factor ना?
So what are the different formulas of power factor? P by S, ठीक cos pi, ठीक VR upon V. It's also the formula of power factor because cos pi is same as P by S, cos pi is the same as VR upon V. This is one more formula for the power factor. याद रखो. अगर phi पता नहीं है, P and S पता नहीं है, and VR and V दिया है, तो to find power factor, VR upon V is same as power factor. समझा? Like A is equal to B, B is equal to C. So we can say A is equal to C. Same concept. So how to find power factor? That is a VR upon V. Okay? We just go through the voltage triangle. Any doubt? The chat box you can write voltage triangle is clear. The chat box you can write voltage triangle is clear. Yeah. Cos pi. Amon ne bataya, yes. Good. So in the chat box you can write VR upon V. Okay. So in the chat box you can write the voltage triangle is clear. कुछ भी doubt है तो पूछो. And then we'll see the remaining two triangles. That is the impedance and the power. Power तो हमने देखा ही है. कुछ प्रॉब्लम नहीं. So voltage triangle is clear, everyone. Good. Rahul, Saha, Vaishali, others. Yeah. Just write voltage triangle is clear. Not a VR upon V. So voltage triangle is clear, everyone. Exam में आने वाला है, याद रखो. I'm going to take some based on this question. ये जो अभी देखा ना, circuit diagram. So series आ गया. उसके ऊपर we'll take the question. And then we'll see two diagram और दो triangle देखते. Okay. So first of all, I draw the voltage triangle. Once again. It's not that much. So this is the voltage triangle, ना? ये कौन सा triangle है? That is a voltage. Now by using voltage triangle मुझे draw करना है impedance triangle. Impedance मतलब resistance का. So how to draw it? From the impedance, from the voltage, how to draw the impedance triangle? See. The body is the same. Body मतलब right angle triangle. This part is the same. Yeah, as it is drawn. यहाँ पे angle phi as it is drawn. Okay. Now the concept is how to draw the impedance triangle, not a resistance. Impedance triangle. Sorry. So this is the impedance triangle. This is total voltage, ना? So what is the total resistance? यहाँ पे अगर total voltage है, यहाँ पे total resistance क्या आएगा? Z. Total voltage is replaced by total resistance. That is Z. Voltage of inductor is replaced by resistance of inductor. मतलब XL. तो V की जगह पे XL. Voltage of resistor इसकी जगह पे resistance of resistor. That is R. क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया. Same body copy किया मैंने. Same format copy किया. V की जगह पे Z. V की जगह पे Z. VL की जगह पे XL. VR की जगह पे R. खत्म. So this is your impedance triangle. Any doubt in the impedance triangle? कैसे draw किया मैंने? Anyone? And then we'll draw the four formulas for the impedance triangle. So we can design four formulas. No? So what is the first formula? By Pythagoras theorem, you can say Z square is equal to R square plus XL square. समझा ये formula कहाँ से आया? तब आपने क्या बोला था? It's R plus XL ना? Why it's wrong? Because this one is correct. By Pythagoras theorem, you can say Z square is equal to R square plus XL square. You get first formula, and then you can design sin pi, cos pi, and tan pi. So what is the sin pi here? What is the cos pi here? And what is the tan pi? Just use your chat box and just give the answer. Sin pi, cos pi, and tan pi. तीनों का मुझे आंसर चाहिए for the impedance triangle. ठीक, किसको आता आंसर? Let's see. So just give me the answer. What is the value of sin pi, cos pi, and tan pi? तीनों का आंसर मुझे चाहिए.
So what is the sin pi, cos pi, tan pi? Let's see. कौन आंसर देते हैं? देखते हैं कौन कितना एक्टिव है. किसी वैसे ही बैठे हो physically. So just tell me what is sin pi, cos pi, and tan pi. तीनों का वैल्यू मुझे चाहिए. By impedance triangle. So anyone with the answer of sin pi, cos pi, tan pi? No one? क्यों? अब तक नहीं है. अब तक तो किया सब कुछ. sin pi, cos pi, tan pi. What is sin pi? It's the opposite upon hypotenuse. So opposite क्या है? XL. Hypotenuse क्या है? Z. So it's XL upon Z. It's XL upon Z. Okay. Now just tell me what is cos pi. Cos pi क्या आएगा? Sin pi is XL upon Z. हम उन्होंने दिया. What about cos pi? Just tell me अभी. तो cos pi क्या आएगा अभी? And tan pi क्या आएगा? So what is the cos pi and what is the tan pi? So sin pi is XL upon Z. Then cos pi क्या आएगा? Yes, that is adjacent upon hypotenuse. That is R by Z. Good. I'm going to the answer. Last one, tan pi. What is tan pi? Opposite upon adjacent. Tan pi क्या होता है? Sin by cos XL upon R. Just tell me what is the power factor. ये चार फॉर्मूला से मुझे अगर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द आंसर ऑफ पावर फैक्टर? क्या आएगा पावर फैक्टर? या सागन में परफेक्ट दिया. गुड. वेदांत में दिया. तो लेट ना कर रहे हो, ऑन टाइम. मैंने टाइम दिया था ना फाइंड आउट करने के लिए. इतना लेट क्यों हो रहा है? जस्ट टेल मी, मुझे अगर पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर कैसे फाइंड आउट? बाय यूजिंग इंपेडेंस ट्रायंगल. अगर मुझे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट? I want to find the power factor by using the impedance triangle. So which formula is useful? वेदांत ने दिया, करम उनका सब दे दिया, करो ने दिया. इतना लेट नहीं है, इतना लेट नहीं चाहिए आंसर मुझे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है. यस, r by z. कैसे फाइंड आउट किया? पावर फैक्टर इज cos pi ना. cos pi का वैल्यू क्या है? दैट इज r by z. समझा? चलो लेट्स सी दैट impedance triangle. See, this is the impedance triangle ना. Z XL R pi. Cos pi is R by Z and tan pi is XL upon R. So power factor कितने फॉर्म में? Power factor is P by S. Yes. Power factor is a cos pi. Yes. It's a VR upon V. Yes. R by Z. Yes. तो चार फॉर्मूले देखे आज पावर फैक्टर. P by S, cos pi, VR upon V and R by Z. तो इन पावर ट्रायंगल तो हमने देखा था लास्ट टाइम जब हमने टाइप्स ऑफ पावर देखा था. दैट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज पावर ट्रायंगल. सेम SPQ. दिस वन हमने ये भी देखा था. सी cos pi is P by S. ये तो देखा था हमने. So it's just revision. It's just a revision power triangle. So any doubt in the impedance triangle? Anyone? Just take it. Else in the chat box, it write impedance triangle is clear. Because the chat box, it write that impedance triangle is clear. Chalo. So here we're done with the series RA. Tomorrow we'll take the sum based on series RA. I'll take one sum, then you can solve the second part as a homework, and then start the series RC. This is series RL देखा आज. Tomorrow we'll see series RC. And then topic is over. बाकी topic छोटे. And then we'll discuss about the exam also. Okay. So in the chat box, you can write impedance triangle is clear. So any doubt anyone in the impedance triangle? So tomorrow's lecture time I'll inform you. Okay, mostly it's a 9 o'clock.
So tomorrow we'll take a lecture at 9 o'clock. Okay, mostly because afterwards I'm totally busy. So tomorrow we'll take, I think, 2 lectures. One lecture for the series RC and some based on this two, and one lecture for the discussion of exam. Okay, exam case. Okay, for the EC. So tomorrow we'll take 2 lectures. Okay. First lecture is on 9 to 10. Second lecture I'll inform. Okay. Sure. So any doubt which chapter? Now in the chat box you can write series RL is clear. क्या लिखना है chat box में? Series RL is clear. तो जो कुछ भी हमने लिया series RL में, that should be clear. Series RL में कुछ भी doubt है? We'll take some on tomorrow. We'll take one sum, then I'll give you one more. So any doubt in the series RL? Anyone? So the chat box you can write series RL is clear. Those who are active in the chat box, only they'll get the attendance. So, any doubt anyone? No doubt? Sure. Sure. So just write your name in the chat box and then we'll stop. Just write your name in the chat box and then stop. Without over, you can use the chat box. In the chat box, just write your name and then we'll stop. Just write your name in the chat box and then we'll stop. And tomorrow we'll start with the next topic, that is the series RC circuit. Can you copy series RC? So tomorrow we'll start with the series RC. ये वाला series RC. We'll start with series RC. Same circuit diagram, formulas, impedance, waveform, phasor diagram, and these are the triangles. These are triangles we give. And then the topic is over. Okay. So tomorrow we'll see what is the series RC. खत्म. And the topic is over. Okay. So we have Omkar, Rahul, Amol, Aditya, Karan, Sarah, Aditya Tiwari, Krishna, Karam, Tanish, Nihar, Isha, Gaurav, Mukund, Vaishali, Vedant. Okay. That's it. Mukund, Aditya Tiwari, yeah. So जो active थे continuously chat box में from the starting of the lecture, only they will get the attendance. Sure. So we'll stop here. Tomorrow 9 o'clock. Okay, we'll take a lecture of EC. We'll see the first one based on the series RC, series RL. Then I'll be the one homework. Then we'll start with the series RC. We'll take the whole RC, sum, and tomorrow at end of the chapter. And then we'll take one more lecture in the afternoon for the discussion on the exam. I'll inform you for the next lecture. 9 o'clock lecture. Okay. Let's stop here. Chalo, bye.